हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंटरनेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ 5 प्रबेदान बस इंडोनेशिया देंगान बस मलेशिया। तो चल के देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर आते हैं। तो लेट्स प्ले। ओ, क्या बस है। Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki segudang perbedaan, baik itu dari luas wilayahnya, ciri khas penduduknya, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Dan inilah 5 perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 5, mari kita bareng-bareng membangun Amazing यार, ये क्या बात है। mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Man. Taufik Arish, ये क्या बस है। Melayani antar negara. Salah satu perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia, yakni trayek bus yang melayani antar negara. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa satu-satunya bus Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai saat ini itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Damri, yang melayani rute dari Pontianak Indonesia dengan tujuan Sarawak Malaysia dan dilanjutkan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan di pertengahan tahun 2018 lalu, perusahaan otobus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. बहुत ही प्यारी बस है, बहुत ही लग्जरी बस है यार, अंदर की लाइटिंग बहुत ही कमाल की है। Namun berbeda ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga, yakni Malaysia. Bus Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia ataupun sebaliknya, seperti J Express, Eva Express, Setia Jiwana Sakti, Sri Merah, dan masih banyak lagi guys. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura, seperti SKS Bus Double Decker yang melayani sampai ke Marlin Park, Singapura. Number 4. Jarak tempuh. ये बहुत ही old बस लगी। Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 km persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lain. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Hal itu terbukti dengan adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih guys. Bus-bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta, bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo, bus Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta, Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta, kemudian bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, Jawa Timur, dan masih banyak lagi guys. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km persegi, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak tempuh kurang lebih 341 km. Perusahaan otobus Sri Merah yang melayani jarak tempuh kurang lebih 350 km. Masih banyak lagi guys. ये बहुत ही प्यारी है, कलर भी बहुत ही प्यारा है यार, रेड है। नंबर 3, Kecepatan.
Perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang paling mencolok, yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya, dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Namun bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga, yakni Malaysia. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi sekalipun. Bagi yang suka naik bus di Indonesia, pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia, guys. Number 2. ये बहुत ही बस अच्छी है, लग्जरी पूरी सीट बहुत ही अच्छी है जी. Selanjutnya yakni terkait kenyamanan. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya. Dan terlihat jelas dari bodi busnya juga. Namun dari segi bodi busnya bukan merupakan perbedaan yang mencolok. Akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21. Namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 atau 22. Sedangkan kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama, tapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi di setiap kursi ada sandaran kakinya, kursi pesawat GA. Dan itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan, guys. ये बहुत अच्छी बस है. नंबर 1, लेडीज चला रही है. Asisten supir alias kondektur. Di Indonesia, keberadaan kondektur dalam setiap bus sangat vital perannya setelah supir, mulai dari menarik karcis, mencari penumpang, membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang, memberikan tanda kalau bis mau menyalip, membantu mengatur parkir bus, dan masih banyak lagi. Tapi hal ini tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga, yakni Malaysia. Tidak ada yang namanya kondektur, semua dikerjakan oleh supirnya sendiri, yang seharusnya dibantu oleh kondektur. Namun ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita, kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia. Dengan adanya kondektur, setidaknya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, guys. बहुत ही प्यारी बस है यार. Oke guys, dari kelima perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang telah kita bahas tadi, perbedaan mana yang paling pas banget menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh ya guys, kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गई. आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. दोनों तरफ की बस नेक्स्ट लेवल है, मुझे बहुत अच्छी लगी यार. डबल डेकर वाली बस चल रही है, और इंडोनेशिया की जो दिखाई थी जिसमें एलईडी लगी थी वो बहुत ही कमाल की लगी मुझे. और बस की यार दोनों तरफ की चेयर वेयर बहुत अच्छी लगी. मतलब लग्जरी पूरी बस है, बहुत ही कमाल की लगी. मतलब माइंड ब्लोइंग, अंदर बढ़िया रेड कारपेट पड़ा था. और वो बस ज़्यादा अच्छी लगी जो लाइन बसेस जा रही थी इंडोनेशिया तरफ की, जिसमें एलईडी लाइट लगी थी, वो बहुत ही कमाल की बस लग रही थी यार. एक सिर्फ बस है. और जो नंबर 1 पे बस थी यार, उसमें तो लेडीज चला रही थी, वो बहुत ही कमाल की बस लगी. अंदर रेड कारपेट पड़ी थी, मतलब अंदर की लाइटिंग वाइटिंग भी बस की बहुत ही कमाल की. नंबर 5 पे दिखाई थी, उसके अंदर की लाइटिंग वाइटिंग भी बस की दिखा रहे थे, वो बहुत ही कमाल की थी. और ज़्यादातर बसें डबल डेकर वाली थी, जो बहुत ही कमाल की लग रही थी. लेकिन एक से बढ़कर एक बसेस यार, नेक्स्ट लेवल, बहुत ही कमाल की बस. हालांकि इंडोनेशिया की बस ज़्यादा अच्छी थी मलेशिया से. मलेशिया की भी थी, लेकिन मुझे इंडोनेशिया की ज़्यादा अच्छी लगी. इंडोनेशिया की बस बहुत ही कमाल की यार, बहुत ही प्यारी प्यारी बस लगी. मैंने फर्स्ट टाइम दोनों कंट्रीज की बसेस देखी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी बस. जो सिंदूरों वाली बस दिखाई थी वो तो बहुत ही कमाल की, उसको तो मैंने कई बार रेस में देखी थी. वो बहुत ही फास्ट बस है, बहुत ही कमाल की भी बस लगती वो. एक से बढ़कर एक बसें थे यार उधर की, बहुत ही अच्छी लगी मुझे. तो मानना पड़ेगा कि अंदर से बैठो तो पूरा
प्लेन वाली फीलिंग है, क्योंकि एलईडी सब बस में लगी थी यार। ट्रेनों में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे बसों में भी सब एलईडी लगी है, बहुत ही कमाल की है। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।